So, in today's session, we start the 16th chapter, audit and internal control checks. So, basically, if you just see in here, this chapter talks about what is audit, what is financial control. Now, when we talk about financial control, it is more towards internal control. Now, understand this. There are two different meanings of internal control and internal check. Write it down. Internal control is separate, internal check is separate. Just see this. Internal control is the process designed and effected by management to provide a reasonable assurance about achievement of entities' objectives with regard to reliability of financial state reporting, effectiveness and efficiency of operations, compliance with applicable laws and regulations. So internal control is something which you have designed. जैसे कि देखो, this is the time which you have to come to the office. This is the time which you have to leave the office. This is the process where you need to record sales. You cannot deal with cash sales. You should only deal with account sales, like direct bank transfer, wire transfer, so that the record is maintained. Don't do any cash expense or sale. Don't do any expense without a voucher being created for it. What is this? This is internal control for you. Okay, this is internal control for you. Now, based on these, how do you account for some transactions? You cannot just be a bit lenient. Okay, this is how we need to record. You should be specific on how you are recording those transactions. You should record the receivables properly, payables properly. अब जैसे कि देखो, you should follow all accounting principles. जैसे कि matching principle है. Now, in matching principle, what is the problem? What happens is, suppose you are doing sale in this month of July, you are doing sales. You are receiving that amount in the month of August. So it should be termed, it should be recorded as the sales of July. It should not go towards, if you are receiving it in the month of August, it should not be considered as the month of August sales. I guess getting this differences. मतलब आपको ऐसे तरीके से ऑपरेशन करना है so that it is giving a fair picture of the financial reports. Whereas internal check is an element of internal control concerned with ensuring that no single task is executed from start to finish by only one person. Each individual's work is subject to an independent check by another person in the course of that other person's duties. मतलब कि कोई भी एक ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो स्टार्ट से एंड तक सिर्फ एक ही पर्सन करे. And if it is done so, then there are high chances of fraud to happen. उससे पहले देख लो, for internal control, accounts department might have policy to check additions and multiplication on a purchase invoice received before it is approved for payment. This control would help to ensure that the correct amounts are paid on the organization suppliers and would therefore improve reliability of the amounts reported as purchased. In fact, doing your due diligence, proper recording of those transactions by yourself also is important. Everyone there with me, everyone following up. I hope everybody making short notes. Internal control, internal check, internal audit. ये तीनों complete different stuff है. Do not mix anything. ये सब में internally तो है. Okay. Now, internal control, whose responsibility is to make that framework of internal control? Management. Okay. Whose responsibility to do an internal check? Huh? No, it is again the management again. The management should look into that. How is the things happening? See, internal control is setting up a framework, setting up a structure. जैसे कि आपको एक मॉल के अंदर जा रहे हैं तो मॉल के अंदर कैसा जाना है, वो क्या नाम है,
हाँ मेटल डिटेक्टर के अंदर के थ्रू जाना है. व्हाट इज दैट? इंटरनल कंट्रोल डिजाइन किया गया है यहाँ. देन is everyone passing through it or not? That is internal check. समझिए दो differences. Setting up is internal control. Internal check is checking whether it's happening properly or not. I guess understanding the difference. Like consider a company sells bottled drinks to supermarkets and other retailers. The company maintains inventory in a central warehouse. Internal controls would be established by management to ensure the security of the inventories so that they are not stolen by employees or third parties, and to ensure the accuracy of the accounting figures for inventory included in the financial statements. Now, what are the typical physical controls? Keeping the front door locked, not in use, and banning visitors from entering warehouse storage area. Regular inventory count. The inventories held could be counted every 6 months to check the accuracy of the continuous records. An internal check on inventory quantities could be implemented at each inventory count by ensuring no individual counts and items are there responsible for making. जैसे कि कोई एक person ही पूरा करे, ऐसा नहीं होना चाहिए. In this way, it would not be possible for an employee to steal items from inventory and then pretend at a regular count that the stolen items were still in the warehouse. Such a theft would require collusion between employees if it is going to remain undetected. Collusion between employees मतलब 4-5 लोग मिलजुल करके fraud करके fraud को finish करे. That will be a problem. I guess getting it. It's just like कोई एक बैंक की चोरी हो जाती, वो चोर जो है सो पूरा पैसा लेकर जाके घर में बैठ जाते कि चलो हम लोग को बैंक की चोरी हो गई. तो एक उनमें से एक बोलता कि चलो सर गिनना शुरू करते हैं कितने पैसे हमने चोरी किए हैं. वो तो अरे गिनने की जरूरत नहीं, कल टीवी में आ जाएगा कितने पैसे हम चोरी करें पता लग जाएगा. तो क्या होता, अब वो लोग टीवी पे रिपोर्ट आई कि 10 मिलियन चुराए गए हैं यहाँ से. अब ये चोर गिनते जा रहे हैं तो 1 मिलियन तक भी नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पर तो 10 मिलियन की चोरी बता रहे हैं. तो फिर बड़े चोर कौन हुए? समझ आ रहा है आपको? बैंकर्स क्या करे, उस वक्त का फायदा उठा लिए. 1 मिलियन का जो लॉस हुआ उनको, 1 मिलियन का जो चोरी हुई उसको 10 मिलियन की बता के 9 मिलियन वो लोग खुद घपला कर दिए. Who are the bigger criminals here? Now this is just a story. I don't know whether it actually happened. हुआ क्या कभी ऐसा मालूम है? चलो. A company's internal controls can be so well designed that they eliminate the risk of failing to achieve company's objective. क्या बोलते हैं आप लोग? चेक करो तुम और बोलो मत. आई वांट अदर्स टू आंसर. आप लोग क्या बोल रहे हैं? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स क्या है? कैन बी के साथ साथ यहाँ पे ये देखो एलिमिनेट लिखा हुआ है. एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब कंप्लीटली जीरो. एंड इन एनी सिनेरियो आप कंप्लीटली फ्रॉड को जीरो नहीं कर सकते, एरर को जीरो नहीं कर सकते. देयर विल बी इंटेंशनल इज फ्रॉड, अनइंटेंशनल इज एरर, बट इट विल बी देयर, इट कैन बी देयर. हो सकता है कि आपके इंटरनल कंट्रोल से आप पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिए और फ्रॉड नहीं हो रहे तो नए तरीके से फ्रॉड होते फिर. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल? कैन यू गाइस जस्ट राइट डाउन these 5 points? The orderly and efficient conduct of the business, safeguarding of assets, prevention and detection of fraud and error, the accuracy and completeness of accounting records, and timely preparation of reliable financial information. Write it down fast.
Done. Now, understand this. You know why you need an internal control? So that things are in place. Okay. So that things are done properly. So that the assets are safeguarded. There's prevention of fraud and error, detection, prevention. There are chances of accuracy and completeness of accounting records, and time preparation of financial reports, financial statements. This is why you need an internal control. This is what the benefits you're going to get from it. Now, why do company needs internal control? Are you guys understanding, right? What is the meaning of internal control? थोड़ा टाइट रखो कंपनी में क्या क्या काम चल रहा है. अब फॉर एग्जाम्पल, अगर 9 बजे के बाद आपको घर के बाहर नहीं निकलना है, ठीक है, या 9 बजे से पहले आपको घर वापस आ जाना चाहिए, अगर किसी घर का ये रूल है, दैट इज इंटरनल कंट्रोल. ओके. जैसे कि आपके घर में आपको बोल रहे हैं कि चाहे जो हो जाए आप उधार किसी से मत लो. डोंट टेक लोन फ्रॉम समवन. ये क्या हो गया? आपका इंटरनल कंट्रोल हो गया. इसका कोई लॉ है क्या? इज देयर एनी लॉ बिहाइंड इट? नो. It is your own internal controls, internal limits, so that you don't fall into any problems. Okay, everyone there with me? Now, internal controls, more details. We are going to come through it when we will be doing more such stuff. But the components of internal control are control environment, the entity's risk assessment process, information systems and relevant to financial reporting, control activities, and last is monitoring controls. So these are the 5 components of internal control. Can you guys just write it down? In fact, if we remember in other materials, it is given in this manner. Crime. CRIME. Crime talks about, this is a cheat code to remember. Control activities, risk assessment, information system relevant to, you can see in there, then monitoring controls, and last one is control environment. CRIME. और फिर यहाँ देखो, the term internal control can refer to any of these 5 components. Now, control environment is like creating an environment in such a way around the organization
कि हर चीज कंट्रोल में रहे, उसूल नियम का उल्लंघन ना हो और पालन हो उनका। मालूम है ना, उल्लंघन और पालन, उल्लंघन का मतलब फॉलो करना रूल्स। यस ना। उल्लंघन का मतलब फॉलो करना रूल्स। मैं 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 सीरियसली सोच रहा हूँ, जो लोग ये रिकॉर्डेड क्लास सुनने वाले हैं ना, मतलब अभी नहीं, मतलब कुछ महीनों के बाद सुनने वाले हैं ना, तो ये बोलेंगे आखिर कैसे बच्चे थे रिकॉर्डेड क्लास में, उल्लंघन का मतलब फॉलो नहीं करना या फॉलो करना, इसका भी जैसे क्लैरिटी नहीं थी। ये कौन से देशद्रोही बच्चे थे बोल के बोलेंगे फिर वो। खैर, उल्लंघन का मतलब those people who do not follow the rule. Well, you create an environment in such a way that rules, regulations, whichever your is being made, उसको फॉलो किया जाता है। अब जैसे कि अमिताभ बच्चन को अगर आप देखा जाए वो मूवी में 2000 in the year 2000 I guess it came, Amitabh Bachchan and Shah Rukh Khan worked for the first time in their life together। तो उसमें एक बहुत मशहूर डायलॉग था, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, जो आज भी बहुत बड़ा मीम मटेरियल है। दैट इज अ कंट्रोल एनवायरमेंट अमिताभ बच्चन क्रिएटेड इन दैट कॉलेज। लेकिन हर बार उसका उल्लंघन किसने किया? शाहरुख खान ने। क्यों किया? उसके लिए मूवी देखना जरूरी है आप लोग को, अगर नहीं देखे हैं अभी तक तो। बट फॉर नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ एन एनवायरमेंट इज गेटिंग क्रिएटेड, कि वो लोग नियम तोड़ने से भी डरते हैं। जैसे कि ये ग्रेट क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो एक रसूल बनाया गया है, दैट्स एन इंटरनल कंट्रोल। मतलब वो कोई गुनाह नहीं है, ओके, दैट्स नॉट मॉरली इनकरेक्ट, बट द रूल इज क्रिएटेड इन सच अ वे सो दैट you can develop yourself in that manner, okay? So the control environment sets the tone at the organ in terms of control consciousness of its employees. It is the foundation of effective internal control, providing discipline and structure, etc., etc. Then risk assessment. Business risk is the possibility that an event or transaction could occur that would adversely affect, मतलब कि उल्टा effect हो जाए, the organization ability to achieve its objectives and execute its strategies. It is conventionally split between internal and external factors as shown below. So if you just see what are the internal business activities: product development, production, sales, procurement, product delivery, after sales service, whereas external is political factors, socio-economic factors, laws, regulations, technological factors. All these stuff jot down towards your business risk. The risk that the financial statement might be materially misstated. People may not have find value from this. अब जैसे कि देखो, ओशन गेट से फिर कोई ट्रैवल करेंगे? हाँ, ओशन गेट से फिर कोई ट्रैवल करेंगे? अगर सपोज देखा जाए तो, ओके, बोलना तो चाहिए नहीं, लेकिन देखा जाए तो ओशन गेट की तो मार्केटिंग हो गई ना। इससे पहले कभी जानते थे क्या आप ओशन गेट कंपनी, स्टॉकटन ट्रस्ट को जानते थे आप? देखो कितना मुंह सवानी याद होगा, क्यों? क्योंकि इतने उसके बारे में बताया जा रहा है हर एक के बाद सामने, ये यूजिंग इट एज मीम मटेरियल एंड ऑल दैट स्टफ, कि अगर आपकी मौत वहां पर लिखी है तो आपको जाना ही है, एंड ऑल दैट स्टफ स्टफ टॉक्ड अबाउट। बट व्हाट आई सी एज बिजनेस इज दैट वो लोग को जितना मार्केट में एक्सपोजर मिलना था मिल गया, नहीं तो ऐसे भी जो है सो, ऐसे भी जो है सो एडवेंचर्स होते, मालूम था क्या आपको? अच्छा, आपको मालूम, ऐसे एडवेंचर तो आपको पहले मालूम ही नहीं था पहले तो अरे ऐसा भी होता क्या बोल के सोचे थे, ऐसा भी करते क्या, इतनी दीवानगी भी रहती क्या लोगों के पास? अब क्या हो रहा है, लोगों के पास नेक्स्ट सबमरीन कब जाने वाली है, कोई है कहीं, एनरोल कर सकते हैं क्या हम लोग? फाइंडिंग आउट, बिलीव मी, यस, जाएंगे फिर आप रेहान उसमें।
हम तो अकेले हैं, बाहर धूप में नहीं निकलते, वहां कहाँ जाना सब। But as you say that the trust is lost, that organization's trust is that's business risk. Where they failed, they have failed in their internal business activities, product delivery, their production, product not product development, product development also they failed. They didn't make a proper product. And then after that, these socioeconomic trends, on sorry, these political factors, that what exactly you're doing is not good for people. Some things take it over. Then information system relevant to financial reporting objectives consist of the procedures and records established to process the transaction that the entity carries out and to maintain accountability for the related cases, liabilities and equity. Many information systems make extensive use of information technology. जैसे कि कोई भी organization है, they would try to utilize these accounting systems for their most benefit. क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल सिस्टम से अगर आप कर रहे हैं, तो वही लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं जिनको आप अथॉरिटी दो. Randomly no person can do it, right? Yes or no? Only those people can do the work whom you have given authority for. Okay, now just see in this, identify and record all valid transactions. Who can do it? Those are authorized to do it, not just randomly any Tom, Dick and Harry can do it. Okay, describe the transactions in sufficient detail or to permit proper classification of financial reporting. Then measure transaction, permit recording of the proper monetary value in the financial statement, determine the correct accounting period in which transactions should be recognized. ये सब accounting system से, okay, from an information system, if you are doing it, it will be much better for you. अब जैसे कि देखो, you're creating something called a dashboard or something like for your own internal reporting purposes, internal control purposes, you are preparing, reports for your own organization. Will it be easy if you are running on a financial like information system? Will it be easy for you? Or if you are running it manually, it will be easy for you to make a report? On any day, if you are using a software, you can make reports like this. In few seconds, you can make a report. But if you're using it manually, you have to enter the data, you have to make a report. That can be, and chances of manipulation will also be there if you're doing as such. Yes or no? Manipulation हो सकता है ना, तो इसलिए सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं, लेकिन डिटेक्ट कर सकते सॉफ्टवेयर में भी थोड़ा इजी डिटेक्ट कर सकते हैं. अगर बहुत ज्यादा शातिर तरीके से अगर आप उसको कंसील कर रहे हो तो नहीं डिटेक्ट कर सकते, लेकिन मोस्ट केसेस, मोस्ट सिनेरियोस यू कैन. अब जैसे कि देखो कि बैंक का स्टेटमेंट है, अब बैंक के स्टेटमेंट को आप लेकर रिकंसाइल कर रहे हैं, तो फिर कहाँ चांसेस हो गए, चांसेस कम हो जाते. बैंक का स्टेटमेंट, कैश अकाउंट के डिटेल्स, you're sitting up to try to match it up, get the right amount, the chances of that fraud will come down. बैंक का तो मैनुअल रिकॉर्ड तो नहीं रहता ना, पासबुक से थोड़ी करते बैंक अकाउंट का, सीधा स्टेटमेंट डाउनलोड करते, और स्टेटमेंट भी सीधा CSV या फिर एक्सेल फाइल में खुलती, PDF भी नहीं. PDF रहा तो फिर अलग, PDF को कन्वर्ट करो उसमें, और PDF को कन्वर्ट करना एक्सेल या वर्ड में भी बहुत बड़ा टास्क है. Then comes control activities. ये देखो, authorization, comparison, computer controls, arithmetic controls, maintaining a trial balance and control accounts, accounting reconciliations, physical controls, segregation of duties. ये सब चीजें करेंगे तब जाके आपका कंट्रोल स्ट्रांग होगा. Otherwise, things can go haywire. Things can go out of control. प्रॉपर जो लोग ऑथराइज्ड है वो लोग ही करें,
प्रॉपर कंपैरिजंस चलते रहे उसके कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है. There should be proper computer controls. Basic computer controls should be there. Basic computer controls का मतलब, suppose if you are filling in a form, you should be clear that in this column it should be alphabetical only, or in this column it should be numericals amounts only, and it should be in dollars only, or it should be in rupees, something like this. मैथमेटिकल कंट्रोल्स वही तो बोला ना मैं, जैसे कि कोई एक कॉलम में आपको अल्फाबेट चाहिए होना है तो अल्फाबेट ही रहना, आपको एक कॉलम में अमाउंट में चीज चाहिए तो अमाउंट में ही एंटर होना वो. अगर हाँ सिस्टमाइज्ड अमाउंट के कॉलम में अल्फाबेट्स एंटर करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करना, वही एरर बताना. ओके, डन. अब इसके अंदर मेन आ रहा है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, बट दे आर टॉकिंग मोर अबाउट इट. ऑथराइजेशन, a person who is responsible should be doing it. Comparison इसलिए करना है आपको so that you know where you're going, how you are working, so that you can do proper comparison. Have proper control systems, computer controls, arithmetical controls. Check for minor errors that would not have other been detected. Figures can be recalculated. Check that they are correct. You can recheck. You can calculate manually. Maintaining a trial balance and control accounts, you can do that too. Accounts reconciliation, physical accounts reconciliation is something which you do regularly. जैसे कि बैंक स्टेटमेंट ले लो, अपना स्टेटमेंट ले लो, क्रॉस वेरीफाई if there is anything as such. Physical controls, you should have proper locks, passwords for people to enter, or you can also have a backup place at a different place. Then segregation of duty, split transaction, जैसे कि पूरा काम एक ही स्टाफ का नहीं होना चाहिए. इट शुड बी स्प्लिट बिटवीन टीम मेंबर्स, एंड दोस टीम मेंबर्स का भी जो रिलेशनशिप ऐसा होना नहीं चाहिए फ्री. इट शुड बी अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. वन पर्सन शुड डू इट, वन पर्सन शुड क्रॉस चेक इट, सो देन थिंग्स कैन गो प्रॉपर. जैसे कि कोडिंग में होता है ना, एक आदमी होता है जो कोड बनाता है, कोड को डिप्लॉय करता है, and then there will be another person who will be testing those controls, testing those codes कि ये सही है या नहीं है. तो जो टेस्ट कर रहा है, सपोज जो बना रहा है और टेस्ट कर रहा है वो एक ही आदमी हो तो पूरे टेस्ट पास होता हो. ओके, now this is again an example. I am moving forward. हाँ उसके हिसाब. Then monitoring of controls, the process to assess the quality of internal control performance over time. It involves assessing the design and operation of controls on a timely basis so that corrective actions can be taken. Everything which is there in this material is important for you, and you guys need to read it.
what is to be explained in a just what is to be explained, whatever is required, highly required, I'm not missing that out. But things like this, जैसे कि देखो अभी ये एक example है, okay, this illustration. I want you guys to go through it. Okay. Don't leave it as sir just left it in this recording. I'll also leave it. Do not. I did not just leave it. We just talked about it. Go through it once again. Don't even leave one single letter unturned in the material. And you guys can do it. Almost 95% is covered in the class only. Okay. Now moving forward, controls in more details. Many internal controls will be relevant to larger enterprises because they will be able to do it. Larger enterprises वो लोग controls और अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि उनके पास deep pockets होते हैं, वो लोग के पास employees ज्यादा होते हैं. हर कंट्रोल के ऊपर ज्यादा एम्प्लॉय को हायर करना मतलब खर्चा होता ही होता. So they can do it a bit in a easy manner and they require it also. Whereas with some small organization, what can be the internal control? Maximum CCTV camera. बहुत हो गया. Okay. So now let us continue in the next session alternative analysis of internal controls.